Good morning, dear student. Welcome to my channel CKS Physics. Learn Physics with Imagination. Now, I am going to start my video lecture number 4 for the chapter Semiconductor Devices. Before starting my video, I am going to explain what we are studying in previous class. In previous class, we discussed about forbidden gap, and according to forbidden gap, हमें differentiate करते conductor, semiconductor and insulator को. ओके कंडक्टर रे वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप होइक रहउथला. देयर इज नेग्लिजिबल forbidden gap, very small forbidden gap, or there is approximately zero forbidden gap. Okay, in case of semiconductor there is forbidden gap or the value of Eg greater than that of conductor and less than that of insulator. insulator रे forbidden gap रो value high रहिबो, ताठारु सेमीकंडक्टर रे कम रहिबो, एंड कंडक्टर ठारू सेमीकंडक्टर रो फोरबिडन गैप रो वैल्यू हाई रहिबो. ओके, ताले हमें पढ़थिले जे सेमीकंडक्टर रे फोरबिडन गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठारू छोटो होतला, एंड इन केस ऑफ इंसुलेटर द वैल्यू ऑफ फोरबिडन गैप मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो नाउ इन lecture number 4 we discussion about electrical conduction in semiconductor. Okay, so हमें पढ़िबा जे सेमीकंडक्टर भितर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन केमती होछ, मींस जे गोटे कंडक्टर सेमीकंडक्टर भितर करंट केमती को स्टेप रे को वे रे फ्लो होछ. ओके, सो डियर स्टूडेंट ठीक है, भाबो जे गोटे कंडक्टर हो कि सेमीकंडक्टर हो जे कोनोसी मटेरियल रे करंट फ्लो करिया पई फास्ट हमको कोन करिया पड़िबो, फास्ट कोन करिया पड़िबो, वी शुड प्रोवाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस. आमको से कंडक्टर को नहीं कि गोटे पोटेंशियल डिफरेंस सहित कनेक्टेड करिया पड़िबो, मींस गोटे बैटरी सहित कनेक्टेड करिया पड़िबो और गोटे सॉकेट सहित कनेक्टेड करिया पड़िबो फॉर एसी सर्किट. एसी सर्किट हेले सॉकेट, डीसी सर्किट हेले बैटरी सहित कनेक्टेड करिया पड़िबो. फास्ट टाइम जते बेले गोटे सेमीकंडक्टर हो कि कंडक्टर हो ताको जदि हम सेल रे बैटरी सहित कनेक्टेड करिवा देन से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करिवो. तो फास्ट वी शुड प्रोवाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस टू द semiconductor. So here this is a silicon crystal, one type of semiconductor. For example of semiconductor, this is silicon crystal which is tetravalent atoms. Valence cell में 4 number of electrons रहुची, so it create a covalent with their nearby 4 atoms, and we should provide हमको provide करिया पड़िबो a silicon crystal across रे गोटे potential difference. Okay, so first हमें silicon crystal across रे गोटे potential difference connected करिबा. सो हमें सिलिकॉन क्रिस्टल रो अक्रॉस रे कौन कले ना गोटे सेल और गोटे पोटेंशियल डिफरेंस को और गोटे सोर्स ऑफ ईएमएफ को कनेक्टेड कले, दैट इज प्लस टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. सो दिस सेक्शन शुड बी पॉजिटिव एंड दिस सेक्शन शुड बी नेगेटिव. What will happen when we connected a potential difference in semiconductor or silicon crystal? Then what will happen? देखो आम कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स रे पढ़ी जे जिते बेले गोटे सेमीकंडक्टर को आम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रे रखुचे से गोटे इन्सुलेटर पर बिहेव करूची बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल एंड टेक ए पार्टिसिपेशन इन कोवेलेंट बॉन्ड. बट एट नॉर्मल टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर आपको भितर थर्मल ऑसिलेशन होची, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होची, देन इलेक्ट्रॉन फ्री होची. बुझे ताले आम जब टेम्परेचर को हाई करूचे देन कोवेलेंट बॉन्ड गेट्स ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्री. सो इट कौन बाहर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होची. ओके, एंड ड्यू टू द एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन करिवो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हेल्प करिवो, एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेक ए पार्टिसिपेशन इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. एंड ऑल्सो देयर इज क्रिएशन ऑफ वैकेंट प्लेस इज नोन एज होल्स. हम जानिथिले जे जो वैकेंट प्लेस क्रिएट होची से वैकेंट प्लेस को हम कोन कहूचे ना होल्स कहूचे. ओके, ताले जोठी जोठी इलेक्ट्रॉन बाहरिची से सब का में होल्स कहबा. अच्छा, जदि हमें पोटेंशियल डिफरेंस और सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्टेड न करिबा देन ए होल कौन करिवो ना से इलेक्ट्रॉन को फर्दर ट्रैप कर दबो.
because the tendency of holes is to trap another electron from their nearby atoms the पाखापाखी atoms through electron मान को trap करके नहीं जीवो when we connected a cell what will happen कौन होबो देखो when we provide a potential difference when we provide a potential difference across silicon crystal or any semiconductor, then an electric field will set up देखो जिते बेले आमे गोटे सिलिकॉन क्रिस्टल सहित गोटे सेल को कनेक्टेड करिबा देन से सिलिकॉन क्रिस्टल भितरे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड and due to this electric field create a force which attract all the free electrons towards the positive terminal of the cell देखो ताले वर्तमान आम जिते बेले गोटे सिलिकॉन क्रिस्टल सहित गोटे सेल को कनेक्टेड कले ए टर्मिनल होगला पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल शुड बी नेगेटिव नाउ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल अट्रैक्ट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल वर्तमान ए फ्री इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करिवार हेल्प करिवे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्रिएट करिवा पाई ए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल अट्रैक्ट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट वर्तमान जितक फ्री इलेक्ट्रॉन थिबे सबतक पॉजिटिव टर्मिनल आड़ के अट्रैक्ट होके आसीबे ओके ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल नाउ जते बडे फ्री इलेक्ट्रॉन माने अट्रैक्ट होई पळेबे आल्सो देयर इज क्रिएशन ऑफ होल्स वर्तमान सेठी होल्स क्रिएट हो so now there is also creation of holes so now there is also creation of holes which appears to move towards the negative terminal of the cell देखो लिसन सो आमे कौन कले जेते बेले सिलिकॉन क्रिस्टल सहित गोटे सेल को कनेक्टेड कले देन से सेल कौन कला सेल रो किछि गोटे पोटेंशियल डिफरेंस अछि ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस एक इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस and due to electric field a force will be created this force attract all the electrons towards the positive terminal of the cell and there is also creation of holes which appears to move towards the negative terminal of the cell देखो ये word होची important appears to move towards the negative terminal of the cell वर्तमान आम जिते फ्री इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव टर्मिनल को आड़ी के अट्रैक्ट ही पड़े आसिले then there is creation of holes but holes really move करेनी but appears to move कही परिबा केमति देखो suppose हमें कहिबा suppose देखो फॉर एग्जांपल वर्तमान एठी गोटे इलेक्ट्रॉन अछि ना ए सब इलेक्ट्रॉन मान अछंती वर्तमान एपटे को टर्मिनल देछे पॉजिटिव टर्मिनल एंड हियर नेगेटिव टर्मिनल क्लियर वर्तमान देखो ये इलेक्ट्रॉन निजर जो कोवैलेंट बॉन्ड कर ब्रेक करके फ्री हेतिला नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव टर्मिनल द सेल वर्तमान इलेक्ट्रॉन आडे अट्रैक्ट ही पड़े आसला
बर्तमान एठी कोन क्रिएट हे जिवो होल्स and these holes can trap this electron for the nearby atoms or nearby surrounding electron trap करियो बर्तमान जेते इलेक्ट्रॉन एठी के आसिला but now there is also creation of holes बर्तमान एठी इलेक्ट्रॉन सेटअप हो गला clear now these electrons also attracted by the positive terminal of the cell and here these electrons are trapped by these holes so here a holes रे इलेक्ट्रॉन सेटअप हे जे वर्तमान एठी कोन क्रिएट हे जिवो होल्स वर्तमान देखो जते बेले इलेक्ट्रॉन माने अट्रैक्ट हे आसंती होल्स क्वाड मूव कला बेले देखा जाउची याडे होल्स मूव करूची एंड दिस डायरेक्शन रे के मूव करूची ना इलेक्ट्रॉन्स मूव करूची ओके इन दिस डायरेक्शन होल्स appears to move but really होल मूव करूनी इलेक्ट्रॉन मूव करूची बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन मूव करि परिबो एंड होल्स मूव करि परिबो नाही बट appears to move हमें तो कहबा apparent motion of holes होल्स रियल मूव करनी बट मूव कला परी देखा जाउची सो आमे कितरे क्लियर हेले जे जते बेले आमे गोटे सेल सिलिकॉन क्रिस्टल ले कनेक्टेड करूचे देन पॉजिटिव टर्मिनल आडी की सब तक इलेक्ट्रॉन माने अट्रैक्ट हेकी पड़े आसीबे एंड देयर इज आल्सो क्रिएशन ऑफ होल्स व्हिच गोस टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल बर्तमान इलेक्ट्रॉन माने पॉजिटिव कसे होल्स माने नेगेटिव आडी गले क्लियर अच्छा देखो so next point रे हमें लिखि परिबा so we can say the electrical conduction takes place in semiconductor due to the action of both holes and free electrons okay सुना तला हमें कहि परिबा सेमीकंडक्टर भितरे जो करंट क्रिएट हैला हमें जानि जे जेते बेले इलेक्ट्रॉन माने मूव करिवे सेते बेले करंट क्रिएट हो वर्तमान इलेक्ट्रॉन माने ए सेमीकंडक्टर बाहर के सर्किट रे एमते मूव करिवे क्लियर यदि इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ए टाइप रो हैला त अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्रिएट हो तला हमें कहि परिबा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ बोथ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स नेगेटिव टर्मिनल को मूव करिवे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल को मूव करिवे एंड ता भीतर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्रिएट हो सो वी कैन से बोथ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर रे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्रिएट होवा पई बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मानकर इक्वल रिस्पांसिबिलिटी रहूची त दि जण जाक हेल्प करसुती इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पई ओके सो हमें लिखि परिबा that is I equal to IE plus IH that means net current equal to electron जो current create हैला and holes जो current create हैला दि जनकर current रा sum बारिबो net current in the semiconductor so हमें कहि परिबा I होची net current net electric करंट IE को कहि परिबा IE को कोन कहि परिबा देखो बले देखो इलेक्ट्रिक current produced due to movement of free electrons or conducting electrons
फ्री इलेक्ट्रॉन्स मानकर मूवमेंट जो करंट क्रिएट हैला ताको हमें इलेक्ट्रॉनिक आई कहि परिबा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आईएच को कौन कहिबा इलेक्ट्रिक करंट produced due to movement of holes apparent movement of electric current produced due to apparent movement of holes देखो ताला हमें कहि परिबा जेडी आई होची नेट इलेक्ट्रिक करंट आई हला इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आईएस is electric current produced due to apparent movement of holes means holes really move करुनी remove कला पर appears to move that is apparent movement of holes ये really move करुनी electron माने really move करूछन but तार opposite direction रे holes move कला पर देखा जाउची so we can say apparent movement not real movement apparent movement of holes clear तो वर्तमान देखो हमें जानिबा जे IE रो डायरेक्शन कोडे होबो और IH रो डायरेक्शन कोडे होबो देखो सो एक इरेज कर दउची बर्तन IE एंड IH रो डायरेक्शन हमें जानिबा देखो तार हमें जानी थिले जे जो वैलेंसी बैंड थिला और कंडक्शन बैंड थिला वैलेंसी बैंड रे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स रहउथिले जो माने कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन रे हेल्प करि परिबे नाही जेते बेले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किछि आउटर सोर्स रु एनर्जी पाइबे से एनर्जी पाइला परे वैलेंसी बैंड रु कंडक्शन बैंड को जंप करिवे देन द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फ्री से माने फ्री हे जिवे एंड कैपेबल टू क्रिएट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से माने वर्तमान सक्षम हे जिवे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बा इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करिबा पाई बिकॉज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली कैपेबल टू क्रिएट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देयर इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाके कैपेबल नाही जे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्रिएट करि परिबो ओके सो देखो वर्तमान मु गोटे डायग्राम करूची वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड रो सपोज दिस इज वैलेंसी बैंड अच्छा वैलेंसी बैंड रे सपोज ए टाइप रो इलेक्ट्रॉन माने थिले ए टाइप रो इलेक्ट्रॉन माने थिले एटा होची कंडक्शन बैंड ताला हमें जानि थिले इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर at 0 केल्विन टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रे कंडक्शन बैंड रे कोनोसी इलेक्ट्रॉन नथिबे बिकॉज़ सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एज एन इंसुलेटर जीरो टेम्परेचर रे इंसुलेटर पर बिहेव करियो सो देयर इज नो electrons free electrons so all the free, valence electrons are in valence band so we can say valence band is completely filled and conduction band is empty when we provide some extra energy to the semiconductor at normal temperature room temperature जदि हमें किछि semiconductor को extra energy provide करले by the help of connecting a cell or battery ताले कोन होला ए जो इलेक्ट्रॉन माने थिले इलेक्ट्रॉन माने एनर्जी गेन करके ये जो रेंज थिला सपोज हमें रेंज दउथले 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रु 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रु 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताहले ए जो इलेक्ट्रॉन माने कोन करले किछि एनर्जी गेन करले माने एनर्जी गेन कला परे कोन करिवे वैलेंसी बैंड रु कंडक्शन बैंड को जंप करिवे नाउ दिस इलेक्ट्रॉन jumps towards the conduction band from वैलेंसी बैंड बर्तमान से माने वैलेंसी बैंड रु कंडक्शन बैंड को जंप करि गले एई प्रथम चारोटी इलेक्ट्रॉन सो देयर इज आल्सो क्रिएशन ऑफ वैकेंट प्लेस बर्तमान एटी वैकेंट प्लेस क्रिएट हे गेला दैट इज होल्स बर्तमान जते बेले तले मु कहियो व्हाट इज होल्स इज जस्ट ए वैकेंट प्लेस व्हिच इज क्रिएटेड बाय jumping of electrons from valency band to conduction band जेतले valency band रो conduction और हम कहि परिबा जेतले ऑर्बिट रो इलेक्ट्रॉन माने लीव्स करि जिवे जंप कर देबे निज ऑर्बिट छाडी देला परे जो वैकेंट प्लेस क्रिएट हुए ताको हमें
कहि परिबा होल्स और इन केस ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल रे जो कोवैलेंट बॉन्ड रे इलेक्ट्रॉन थिले ए टाइप रो कोवैलेंट बॉन्ड रे इलेक्ट्रॉन थिले बॉन्ड ब्रेकेज हला परे से कोवैलेंट बॉन्ड रो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हे गला एंड जो वैकेंट प्लेस क्रिएट हला सेटा हो हम जानि छे होल्स एंड होल्स बिहेव्स लाइक एज पॉजिटिव पार्टिकल पर बिहेव करिवो सेम एज टू इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दी तार चार्ज से दी फर्स्ट बट ऑपोजिट पोलैरिटी और ऑपोजिट नेचर यदि नेगेटिव रहिला ये पॉजिटिव रहइबो सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रो सेम चार्ज बिकॉज़ देयर इज नो रियल पार्टिकल इट्स जस्ट ए वैकेंट प्लेस दे बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव बिकॉज़ जेहेतु से इलेक्ट्रॉन को लूज करिछि। अच्छा तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक रे पढ़ी थिबो जदि गोटे सरफेस इलेक्ट्रॉन को लूज करि दउछि त इट बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव एंड जे गेन करूची नेगेटिव सो एटू जेहेतु इलेक्ट्रॉन टा बाहरी पड़ीची रिलीज हो जाइची सो एटा पॉजिटिव चार्ज पर बिहेव करिवो सो इट इज नॉट ए रियल पार्टिकल जस्ट ए खाली जगह वैकेंट प्लेस ओके ताले हमें कोन जानिले ना वैलेंसी बैंड को हमें यदि हमें गोटे सिलिकॉन क्रिस्टल को सोर्स ऑफ ईएमएफ सहित कनेक्ट करले ताहले से एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करके जंप कला कोठू वैलेंसी बैंड रो कंडक्शन बैंड को बर्तमान प्रथमे कोन क्रिएट हे गेला होल्स क्रिएट हे गेला। अच्छा इलेक्ट्रॉन जो ऊपर को गला मूवमेंट कला जेहेतु इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करिछि देयर इज क्रिएशन ऑफ ए करंट और इलेक्ट्रॉन माने मूव कले करंट क्रिएट हो सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड देयर इज क्रिएशन ऑफ करंट नोन एज आईई वर्तमान ए डायरेक्शन में कोन होला ना ए डायरेक्शन रे आईई मूव कला इलेक्ट्रॉन मूव कला बुझी होची तले इलेक्ट्रॉन ए डायरेक्शन रे मूव कला। अच्छा वर्तमान ये होल जो रहिला हे होल मानकर टेंडेंसी कोन टू ट्रैप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर नियर बाय रीजन्स पाखा पाखी रे जोठी इलेक्ट्रॉन थिबे से माने से इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करी नै जिबे वर्तमान ए इलेक्ट्रॉन ए होल्स कोन करिबो एठी जो इलेक्ट्रॉन अछि ताको ट्रैप करी नै जिबो। अच्छा आपको जते ट्रैप करी नबो सेकंड स्टेप रे कोन भारिबो स्टेप नंबर 2 देखो स्टेप नंबर 2 कंडक्शन बैंड कथा करूनी केवल वैलेंसी बैंड रो पड़छि ये जते इलेक्ट्रॉन आकु नै जिवो इलेक्ट्रॉन जते नै जिवो ताले ए जो होल्स थिला ए होल्स भितर इलेक्ट्रॉन सेटअप हो जाए होल्स भितर कोन होबे इलेक्ट्रॉन माने सेटअप हो जाए वर्तमान एई जगह माने करे कोन होबो होल्स क्रिएट हो जो वैकेंट प्लेस क्रिएट हो दैट इज होल्स इटी इलेक्ट्रॉन माने अछंती बुझो छी ताले एई सिचुएशन को ऑब्जर्व करछो देखो इलेक्ट्रॉन माने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करूछंती होल्स माने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करूछंती ताले एथरो हम जानिले जे इलेक्ट्रॉन माने जो डायरेक्शन रे फ्री इलेक्ट्रॉन माने जो डायरेक्शन रे मूव करूछंती होल्स तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे मूव कला परी देखा जाउची बट रियल मूव करूची की क्रिएट होउची जे इलेक्ट्रॉन पळाउची खाली जगह रहउची खाली जगह रे होल्स क्रिएट हेला बट होल मूव कला की इलेक्ट्रॉन जंप कला बट होल जंप कला की तले होल वैलेंसी बैंड रे तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे मूव कला तले हम कहि परिबा जे सेमीकंडक्टर रे जो इलेक्ट्रिक करंट तयारी होउची ड्यू टू द एक्शन ऑफ बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रो मूवमेंट जो क्रिएट होउची एंड इलेक्ट्रॉन रो मूवमेंट जो क्रिएट होउची इलेक्ट्रॉन रो मूवमेंट जो क्रिएट हला ताको हमें इलेक्ट्रॉन जो करंट क्रिएट हला ताको आई कहले एंड होल्स जो करंट क्रिएट हला ताको होल्स रो करंट कहले आई एच सो नेट करंट को रहला आई प्लस आई एच ओके तले वर्तमान डायरेक्शन देखिबा आई रो डायरेक्शन देखिबा तले कोन लिखि परिबा आई ई पाई कोन लिखि परिबा कोन डायरेक्शन लिखि परिबा देखो देखो से तले हम कहि परिबा आई ई इज क्रिएटेड बाय movement of free electrons IE is created by movement of free electrons in a direction सुनो भल से IE केमती क्रिएट हैला IE is created by movement of free electrons in a direction opposite to the direction of applied electric field बुझी होची केमिति एटा जानिबा देखो आमे जो सिलिकॉन क्रिस्टल करिथिले मने पकाओ सिलिकॉन क्रिस्टल ले ए डायरेक्शन थिला पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन शुड बी नेगेटिव
ताहले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. आमे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करथिले आउटर सोर्स रे गोटे सेल लगे कि ता डायरेक्शन कौन थिला ना पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन. अच्छा जो इलेक्ट्रॉन माने फ्री हेइथले पॉजिटिव आडी के आसीबे ताले इलेक्ट्रॉन माने को डायरेक्शन रे मूव करले ए डायरेक्शन रे. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ थौ ऑपोजिट डायरेक्शन रे गले. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रो जो मूवमेंट डायरेक्शन हला ए डायरेक्शन रे. ताले हम कहि परिबा I इज क्रिएटेड बाय मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द opposite in a direction opposite to the direction of applied electric field. Okay, understand? तला IE रो डायरेक्शन होची opposite to the direction of electric field. को electric field हमें जो applied electric field करथिला. then holes केमति क्रिएट होची, IH केमति क्रिएट होची देखो. तले होल्स माने तार opposite डायरेक्शन में मूव करूछन, इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन में मूव करूची होल्स तार ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कला परि देखा जाउची अपियर्स टू बा अपरेंट मूवमेंट ऑफ होल्स. सो हम कहि परिबा IH is created by movement of apparent movement of कहि परिबा apparent real move करूनी apparent move करूची. so IH is created by apparent movement of holes in the direction of applied electric field. ताले अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन ने जो डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि सेही डायरेक्शन रे होल्स मूव करूची. ताले IE फ्री इलेक्ट्रॉन सब तयारी हला अने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कला. एंड IH अपरेंट मूवमेंट ऑफ होल्स सब क्रिएट हला रियल में मूव करूनी. एंड ड्यू टू अपरेंट मूवमेंट ऑफ होल्स the direction in the direction of applied field in the direction of applied field जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अछि सेही डायरेक्शन रे होल मूव करिवो. तले वर्तमान हम जानिले जे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन रे जो करंट क्रिएट होउची दी जनक जो क्रिएट होउची इलेक्ट्रॉन जो क्रिएट होउची as well as होल्स जो क्रिएट होउची. एंड होल्स जो करंट क्रिएट हला IH ता डायरेक्शन होउची इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इलेक्ट्रॉन जो करंट क्रिएट हला ता कोनती IE, that is the direction called opposite in the direction of applied electric field. Okay, so हमें जानले I equal to IE plus IH. Okay, erase करूची. नेक्स्ट प्रोसीड करबा आगु. ताले हमें सिखिले इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर. ताले सेमीकंडक्टर रे केमेती इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होउची हमें बुझी गले. वर्तमान हमें पढिबा जे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होउची जदी तार पिछि तो कंडक्टिविटी थिबो. सेमीकंडक्टर रे जेहेतु इलेक्ट्रिक करंट पास करूची दी जनक जोगु गोटे इलेक्ट्रॉन जोगु आ गोटे होची होल जोगु यदि पास करूची तार तो कंडक्टिविटी थिबो सिग्मा रो वैल्यू थिबो. से कंडक्टिविटी केते भारी हम बाहर करिबा. तले नाउ हम पढिबा कोन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर. ओके, तले वर्तमान देखो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बाहर करिबा माने कोन बाहर करिबा ना सेमीकंडक्टर रो सिग्मा रो वैल्यू बाहर करिबा. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी केते होछ बाहर करिबा. अच्छा, आज वी नो दैट हमें कोन जानि छे both electrons and holes are responsible for electrical conduction in semiconductor. That is I equal to IE plus IH. क्लियर, एटा हम जानि छी जे सेमीकंडक्टर रे नेट करंट होची इलेक्ट्रॉन रो करंट प्लस होल्स रो करंट. अच्छा, वर्तमान अकॉर्डिंग टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो अकॉर्डिंग टू the relation between
the relation in between drift velocity and electric current drift velocity and electric current विषय भितर रिलेशन आमे इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ीचे दैट इज I इक्वल टू I N A V D E कौन I इक्वल टू N A V D E दैट इज एठी रहउची N हैला नंबर ऑफ चार्ज कैरियर and area A होची area of cross section we can say area and BD drift velocity इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रे इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर रे पढिछ जो वेलोसिटी रे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करे नेगेटिव टर्मिनल रु पॉजिटिव टर्मिनल को ताको इलेक्ट्रॉन रो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहबा सेमती प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होल्स रे भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहइबो ता ड्रिफ्ट वेलोसिटी होची जो वेलोसिटी रे चार्ज कैरियर मूव करूची और ड्रिफ्ट होची ताको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहउचे ताको डिटेल ले तमे इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर रे पढियो एंड ई होची इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जोटा कि वैल्यू होची -1.6 × 10⁻19 कूलम ओके सो हमें जेहेतु जानिले I इक्वल टू NaVDE सिमिलरली हम IE को लिखि परिबा Ne नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एरिया velocity drift velocity of electrons into charge of electrons okay and for IH we can write NHAVHE माने holes number of holes area velocity of holes drift velocity of holes ये होची charge of holes और इलेक्ट्रॉन दिटा का इक्वल अमाउंट रहइबो ताले हमें यदि एक दिटा वैल्यू ने की इक्वेशन में पुट करिबा I = I + IH रे कम पाइबा देखो ताले हम कहबा सो I = केते हबो ना हम कह देबा NeAVEE + NHAVHE बर्तमान दी थरे कॉमन केते रहउची A रहउची कॉमन E रहउची कॉमन सो वी कैन कॉमन केते नबा हमें नबा AE कॉमन नबा रहिला केते NeVE plus NHBH okay NeVE plus NHBH okay बर्तमान देखो केमति बाच अच्छा ताहले हमें रहिला हम बाके I = AE * NeVE plus NHBH and according to Ohm's law Ohm's law रे हमें पढ़ीचे V = IR that implies I = केते हो V/R वर्तमान ए I जगह हम पके परिया V/R नाउ पुटिंग द वैल्यू वी गेट कम पाइबा V/R = AE and next NeVE plus NHBH ओके NeVE plus NHBH वर्तमान देखो आमे कोन पुट करि परिबा नाम पाखे रिलेशन बाहरिला V/R = AE NeVE plus NHBH again हम जानि जे R = rho into L/A resistance = resistivity into length by area specific resistance this is resistance length and area वर्तमान हमें R जगह रे rho into L/A पके परिबा that is resistivity हमर कोन पचारची conductivity resistivity रो conductivity सिंपल रे भाई परिबो चल वर्तमान R जगह हम केते पुट करिबा V divided by rho into L/A equal to AE right hand side रे AE NeVE plus NHBH क्लियर अच्छा वर्तमान देखो ये जो A टा ऊपर को पळेबो तला मैं एको सीक्वेंसली लिखले कोन पाइबा ना पाइबा
V by L into A divided by rho. V by L into A ऊपर गला A by rho. ओके AE NEVE प्लस NH BH. अच्छा वर्तमान देख A कैंसल देन रहा V by L ऑलरेडी हमें जानिए V by L इक्वल टू केते अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल E इक्वल टू V by D और V by L नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट जोटा हम जानते हैं E इक्वल टू V by L पोटेंशियल चैप्टर रे पढिबो E इक्वल टू V by L. सो E इक्वल टू V by L रे V by L जगह हम पके परिबा E इलेक्ट्रिक फील्ड divided by into 1 by rho. Now E into NEBE plus NH BH. वर्तमान हमर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बाहरी छि कि बाहरी नी. अच्छा तले वर्तमान हम एठी देखि पाइबा 1 by rho रो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए जेपडा से डिवाइड हे परिबो डिवाइड हो जा देखो पहले हमें कौन करिबा ना राइट हैंड साइड रे डिवाइड करिबा NE into BE by E प्लस NH into BH by E. वर्तमान E को हमें डिवाइड करले टोटल डिवाइड करिबा जहा एथरे डिवाइड करिबा एंड एथरे डिवाइड करिबा सेम. सो 1 by rho equal to E into NE B by E plus NH B by H. But ये जो रहिला VE by E या को हम कहि परिबा mu E and VH by E को कहि परिबा mu H. What is mu? हमें कहि परिबा that is mobility. कोन हेडा mobility. And mu B mobility of electrons, mobility of electrons. Mu H mobility of holes. Okay, and mobility होची dead velocity per electric field पढिछ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर रे. मोबिलिटी होची कोन ना मोबिलिटी होची dead velocity per electric field, that is mobility. And एटा भी जानिछ mobility of electrons is greater than that of mobility of holes. Okay, and mu हला कोन mobility and mobility रो फॉर्मूला होची deep velocity per electric field. So mu is mobility of electrons and mu is mobility of holes. Clear? तले वर्तमान हम आ जागा केते पके परिबा आ जागा पके परिबा 1 by rho नाम केते होबो 1 by rho equal to E into NE mu E plus NH mu H. Okay, this is the relation for resistivity. जदि resistivity सहित हमें resistivity बाहर करिबा कहारो सेमीकंडक्टर रो ताले एई फॉर्मूलाटा बाहर. And also conductivity is the reciprocal of resistivity. Conductivity is reciprocal of resistivity. So we can write conductivity equal to E into NE mu E plus NH mu H. Okay, NH mu H. This is the electrical conductivity for semiconductor complete formula. Okay, here this is conductivity and charge of electron. एटा charges के number of electron, mobility of electron, number of holes, mobility of holes. Okay, so आज सेक्शन रे आज वीडियो रे लेक्चर नंबर 4 रे हमें कंप्लीट करले इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर. एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर हमें पढ़िले जे सेमीकंडक्टर जेते बेले करंट फ्लो होची दी जनक जोगु होची इलेक्ट्रॉन जोगु एज वेल एज होल्स जोगु. सो वी कैन राइट I इक्वल टू I प्लस IS. and IE होची रियल मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a direction opposite to the applied electric field and holes. IH होची IH created by apparent movement of holes due to apparent movement of holes in the direction of applied electric field. IH टा applied electric field direction move करिवो
एंड आई एटा ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मूव करिवो एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रे हम केमती प्रूव कले ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रे हम फास्ट नेले I इक्वल टू आई देखो मु 1 मिनिट रिवाइज करूची केमती कंप्लीट तमे सीक्वेंसली मन रखियो हमें I इक्वल टू आई प्लस IH नेले एंड देन कौन कले करंट आउट ग्रिड वेलोसिटी भीतर रिलेशन पकेले I इक्वल टू NABDE यदि I इक्वल टू NABDE रहिला नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एरिया ग्रिड वेलोसिटी एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सो IE कौन हम n जगह NE ABD BEE वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन E देन IH कौन होला NH ABHE and adding this equation I equal to से एडिशन कला पर AE कॉमन रहला पर रहला NE BE plus NH BH वर्तमान I जगह हम ओम्स लॉ पकई कि V by R पकईले देन V by R रु R जगह हम रेजिस्टेंस रो फार्मूला पकईले ρ * L by A टा ऊपर पड़ेला A कैंसिल हो गला देन आउ को रहला हमर V by L into 1 by ρ V by L रे पोटेंशियल ग्रेडिएंट रो फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड E पकईले E into 1 by ρ equal to E into A कैंसिल हो जाईची E into mu E NE BE plus NS BS देन इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट हैंड साइड को आनी डिवाइड कले ग्रिड वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी पड़ला एंड फाइनल आंसर बाहरला 1 by ρ equal to E into NE mu E plus NS mu H and sigma equal to by conductivity equal to E into NE mu E plus NS mu H okay so आज सेक्शन से ठीक था so thank you all of you see you in next class